Hello students, again we are here on the first day of month May and first day है May का और last topic है chapter 2 का, that is microorganism friend and foe. मतलब friend कैसे थे microorganism, foe कैसे थे, harmful effect क्या थी, uses क्या थे, commercial uses, medicinal uses, that everything we have seen till now. And today we are moving to give or today I can say we are going to wind up the chapter with one interesting and very most important topic, that is nitrogen cycle. Cycle mama, Sonali cycle nitrogen cycle. Here we are going to learn nitrogen cycle. Why nitrogen cycle only? Why not hydrogen cycle? Why not carbon dioxide cycle? Why not this all cycle? Why nitrogen only? Nitrogen cycle because nitrogen is very most important as the part of protein, nucleic acid, vitamins and chlorophyll. Means to survival of the plant or to survival of the plant's roots and animal, nitrogen is very most important, because from that only it can be developed into the chlorophyll, nucleic acid, vitamins or protein also. So this nitrogen is very important part. So we are learning nitrogen cycle. You have seen or you have learnt or might be you have heard name of bacteria, that is rhizobium. Rhizobium bacteria you would have learnt in 7th class also, and rhizobium bacteria fixes the nitrogen. Rhizobium bacteria lives in the leguminous plant, legumes वाले जो legumes होते हैं, root plant होते हैं, तो उसमें रहते हैं. Okay, so why they are fixing nitrogen? Symbiotic relationship you have learnt in class 7 कि heterotrophic mode of nutrition in that symbiotic means sharing. Nitrogen fixing bacteria will give nitrogen to the soil. वहाँ पे fix करेंगे compound को, nitrogen को nitrogenous compound में convert करेंगे, and after that from there nitrogenous compound वहाँ पे fix करके that rhizobium bacteria will take nutrition from the root of the plant. मतलब कि symbiotic, both are sharing each other's thing to each other, एक दूसरे को शेयर करते. So here the main role of nitrogen fixing, the main role is only and only for of bacteria, and bacteria only can do that. That's why we have to take the help of bacteria. It's not possible to fix the nitrogen डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर. मतलब कि यहाँ पे प्लांट है मेरे पास और प्लांट डायरेक्टली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइकवाइज टू फिक्स द नाइट्रोजन is not possible directly from the air. That's why here we are going to learn nitrogen cycle. First of all, atmospheric nitrogen. First of all, atmospheric, in the nitrogen is present in the atmosphere, present in the air. How many percentage? 78% nitrogen gas is present in the air, that is atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen will be fixed by two processes, but main process is via bacteria, through the bacteria. Lightning, here it is written lightning. What is the meaning of lightning? Means thundering. So nitrogen can be fixed with the process of lightning also. Means sometimes nitrogen fixes in the soil with lightning, but lightning nowadays daily is not occurring. Lightning is not possible daily. So lightning that sometime only, rarely. Sometime this, especially in which season? Monsoon season. Okay, nitrogen fixing bacteria fix nitrogen in the soil. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सी होगी? राइजोबियम पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेंगे, आफ्टर दैट दे विल गो इनटू द सॉइल एंड दे विल फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल. क्लियर? So this first step, lightning, that rarely occurring. Nitrogen can be fixed with the help of the event, that is natural phenomena lightning, but rarely it's happening. Nitrogen fixing bacteria fix the nitrogen in the soil. After that, bacteria convert nitrogen into nitrogenous compound. Here, due to shortage of space, you consider N. N stands for nitrogen and NS stands for nitrogenous. Whatever, nitrogenous gas हो सकता है, nitrogenous compound हो सकता है. NS means nitrogenous. I have written here. You will not write in exam. You will not write in your notebook. You will write completely nitrogen or nitrogenous. Whatever coming so. N and NS here for your better understanding I am telling के NS और N मैंने जहाँ पे NS लिखा है वहाँ पे word nitrogenous होगा, N मतलब nitrogen, but here I am having shortage of space, that's why I have done. ठीक है? So
bacteria convert nitrogen into nitrogenous compound. Now rhizobium bacteria will convert nitrogen gas into nitrogenous compound. नाइट्रोजन गैस होगा, उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली गैस ले ही नहीं सकते. ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसा गैस है जो प्लांट डायरेक्टली प्लांट कैन टेक फ्रॉम द एटमोस्फियर. बट नाइट्रोजनस गैस, नाइट्रोजन गैस, दे वॉन्ट बी एबल टू टेक, दे डोंट टेक, they can't take, that's why nitrogen into nitrogenous compound. Okay, so यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कि फिक्स किया, फिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया. किसने? राइजोबियम बैक्टीरिया ने. आफ्टर दैट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, आफ्टर दैट जो नाइट्रोजनस कंपाउंड था, तो वो नाइट्रोजनस का कंपाउंड सॉइल में है, आ गया सॉइल में. ओके, सॉइल में आ गया, राइट. It is now in finally soil got nitrogenous compound. गैस भी नहीं, डायरेक्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल गया. कैसे कि कन्वर्ट कर दिया, किसने? राइजोबियम. आफ्टर दैट अपटेक बाय प्लांट. दिस कंपाउंड, अभी मेन बात करते हैं कि ये क्यों हमें फिक्स करना था, इतनी बेजामारी क्यों किया हमने. व्हाई? बिकॉज प्लांट रिक्वायर्स for protein, vitamin, chlorophyll, synthesis of protein, vitamin and chlorophyll, only and only with the help of nitrogen only they can produce protein, vitamin and chlorophyll for the synthesis of plant, as well as to give to serve themselves as a food for another animal, those who are herbivorous. Herbivorous है, उनके लिए food भी चाहिए. So that plant, so uptake by plant, so that compound of nitrogen in the soil that will uptake by plant, that will be uptaken by plant. Plant उसको लेंगे कहाँ से? soil में से. क्या लेंगे? गैस नहीं लेंगे, nitrogenous compound. But nitrogen gas will convert into nitrogen compound with the help of rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria वहाँ पे लाके ऐसे ही nitrogen gas को नहीं छोड़ देंगे. That nitrogen gas will convert into nitrogenous compound, and that compound will be uptaken by plant. Now plant also will use for synthesis. Plant will use to synthesis themselves, synthesis of protein, vitamin, chlorophyll, ये सब synthesis होगा, chlorophyll होगा, then and then only they can do process of photosynthesis, right? So process of photosynthesis, for process of growing up, nitrogen they will take, and this plant who will take? Animal eat plants, means those who are herbivorous, plant, herbivorous animal will eat this plant. मतलब प्लांट खुद के लिए तो नाइट्रोजनस कंपाउंड यूज करेगा, एज वेल एज दैट ड्यू टू दैट अभी प्लांट के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड आ गया, दैट प्लांट विल बी अपटेकन बाय एनिमल. एनिमल विल ईट दिस प्लांट, तो प्लांट के अंदर क्या था? नाइट्रोजनस कंपाउंड. सो दैट कंपाउंड अल्टीमेटली विल गो टू द एनिमल, मीन्स इट विल गेट इनटू द प्लांट ऑल्सो, इट विल गेट इनटू द एनिमल ऑल्सो. अंडरस्टैंडिंग? प्लांट के अंदर भी जाता है, एनिमल के अंदर क्यों? बिकॉज एनिमल इज ईटिंग प्लांट एंड प्लांट इज टेकिंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में कहाँ से आया? बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया कहाँ से लाया? एटमोस्फेयर से. क्लियर? ओके, एनिमल इट प्लांट. अभी क्या होगा? एनिमल खाने के बाद वेस्ट तो रिमूव करेंगे, इजेशन प्रोसेस. ओके, इजेशन मीन्स रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल इजेशन प्रोसेस, एंड व्हेन दे गेट डाइड or when they get dead, so the waste from excretion and death means nitrogen waste बनेगा when they will remove the waste product from their body, or second thing when they will get died. So जब dead हो गए that time also क्या होगा? उनका बॉडी होगा, उनके बॉडी में जो नाइट्रोजन होगा दैट विल मिक्स इन द सॉइल. मतलब एनिमल जहाँ पे डेड होते हैं वहाँ पे यू नो वेरी वेल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट होता है फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, सो इट विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. ओनली बोन्स ऑफ एनिमल विल बी लेफ्ट, rest other thing will mix in the soil because that is organic matter. So when animal get dead, that time also it will get mixed with the soil. And second thing, अगर वो मरते नहीं, डेली तो मरेंगे नहीं, तो क्या होगा? डेली they are removing waste from the body. So दो चीज है, वेस्ट और उनकी डेथ से. वेस्ट एंड डेथ से that nitrogen will mix in the soil. जहाँ पे था वहाँ पे ही आ गया, राइट? नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट के पास था, प्लांट ने तो लिया, बट एनिमल ने लेके फिर से सॉइल में मिक्स कर दिया. ओके, सो हियर आई हैव गिवन 2 एरो. तो आप बोलोगे मैडम आप यहाँ से यहाँ बताना चाह रहे हो या फिर यहाँ से यहाँ बताना, दोनों साइड से बताना चाह रहे हो, 50-50. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट का जो नाइट्रोजनस कंपाउंड था, सॉलिड वेस्ट था, दैट सॉलिड वेस्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड मिक्स हो गया सॉइल में. अभी रही बात नाइट्रोजनस गैस की. ऐसा नहीं है कि सॉलिड वेस्ट होगा तो सॉलिड वेस्ट सॉइल के साथ मिक्स हो गया, बट व्हाट अबाउट द गैस? सो सम ऑफ पार्ट विल बी लेफ्ट एज द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस गैस. इसमें से थोड़ा पार्ट नाइट्रोजनस गैस में
will remain. So bacteria turns nitrogenous compound into nitrogenous gas. Nitrogenous compound already will be mixed with the soil, but nitrogenous gas वो भी थोड़ा कन्वर्ट होगा. दैट हु विल डू? बैक्टीरिया विल डू. सो बैक्टीरिया टर्न्स नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजनस गैस. अभी गैसियस फॉर्म होगा वो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा? एयर में, एटमॉस्फेयर में, वेदर में. एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड कहाँ पे जाएगा? सॉइल में. व्हाई? बिकॉज इट इज कंपाउंड. सो सॉइल नीड कंपाउंड एंड सॉइल विल गिव दैट नाइट्रोजनस कंपाउंड टू अगेन प्लांट. सो गैसियस फॉर्म था वो एटमॉस्फेयर में चला गया और जो कंपाउंड था दैट इज गॉन इन द सॉइल. सो नाउ हियर आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि नाइट्रोजन सॉइल में भी रह रहा है, एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है. सो लास्टली यू कैन कंक्लूड दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन will remain constant more or less. More or less मतलब कि 78% nitrogen is present in the atmosphere. It doesn't mean that it will remain 78 only completely. मतलब ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा. No. More or less constant रहेगा. मतलब कि near about 75 to 78 या फिर 79 के बीच में रहेगा. Sometimes 74 means more or less. थोड़ा बहुत उसके अंदर different होगा. You can differentiate little bit only, but it will remain constant in the atmosphere more or less. So first of all, let's have quick revision. First of all, atmospheric nitrogen 78%. Wherever I have written N, that is nitrogen. NS means nitrogenous. That can be gas compound. Okay, that nitrogen can be fixed via lightning, but that rarely occurs. Nitrogen fixing bacteria fix nitrogen into soil. First of all, it will fix nitrogen into the soil. Bacteria convert nitrogen into nitrogenous compound. Now it will convert nitrogen into nitrogenous compound. Nitrogenous compound में क्यों convert किया? Because gaseous form plant cannot utilize, plant cannot take. That's why bacteria, rhizobium bacteria will take nitrogen from here. It will fix in the soil. After that soil में से compound कहाँ पे जाएगा? Uptake by plant. Plant will use for the synthesis. For photosynthesis plant will use that nitrogen. Animal eat these plants. Animal ये plant को खाएंगे तो animal also will get nitrogenous compound and plant also will get nitrogenous compound. Now animal will get nitrogenous compound obviously after taking they are going to remove waste. So in the form of nitrogen waste or whenever they get died, that time they will release nitrogenous compound into the soil, right? They will release nitrogenous compound into the soil. After that, nitrogenous compound already there in the soil, but some part will convert nitrogenous compound into nitrogenous gas. Means some bacteria turns nitrogenous compound into nitrogenous gas. थोड़ा गैस में कन्वर्ट होगा, थोड़ा कंपाउंड में. नाइट्रोजनस गैस अभी गैसियस फॉर्म है, वो सॉइल को तो चाहिए नहीं, so that will again goes back into the atmospheric nitrogen. So the amount of nitrogen remains more or less constant. So this all about nitrogen cycle. Precisely I have repeated 2 times so you can understand. Easy. It's very easy. It can be asked in 5 marks. You are supposed to draw this cycle as well as you are supposed to explain also. We have finished our chapter 2. Yeah, chapter का last topic आते आते नाम तो याद है कि नाम भी भूल गए. Second chapter, microorganism friend and foe. Now hope so you understood this all chapter and now just be ready to do exercise and then we will go ahead. Till then, take care, go through videos and bye bye.